वीडियो आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, find the magnitude of two vectors A and B having the same magnitude and such that the angle between them is 60 degree and the scalar product is 1 by 2. You are given magnitude of A is equal to magnitude of B. Their scalar product is 1 by 2 and the angle between them is 60 degree. And you need to find magnitude of A and magnitude of B. Is it so? Scalar product 1 by 2 intersection degree. So we have A dot B is equals to mod of A into mod of B into cos theta. A dot B, that is 1 by 2. Mod of A into mod of A into cos 60. 1 by 2. Mod of A whole square into cos 60, 1 by 2. That gives mod of A is equals to 1 by 2. Mod of A, mod of A equals to 1. And that gives mod of A equals to 1 unit. Is that clear? सही है? नहीं है। मैंने यहाँ पे वेक्टर्स नहीं लगाए थे अभी। तो अगर छूट जाते हैं तो आप इसे लास्ट में कंप्लीट कर सकते हैं। So we get magnitude of A equals to 1. Therefore, magnitude of A is equals to magnitude of B. Both are equals to 1. Question number 9. Find magnitude of x for a unit vector A such that x minus a into x plus a equals to 12. X minus a into x plus a is equals to 12. Unit vector A is equals to 1. Magnitude of A is 1 because A is a unit vector. And we need to find the magnitude of x. So we have x magnitude is x vector. So magnitude of x निकालना है. So we have x square minus a square is equals to 12. X square, that is magnitude of x square, a square, that is magnitude of a square. Magnitude of x square minus 1 equals to 12. Magnitude of x whole square is 13. So magnitude of x is equals to root 13. ओके यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया ना, क्या यहाँ पे प्लस माइनस आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव साइड से। क्वेश्चन नंबर 10, if a b and c are three vectors such that a plus lambda b is perpendicular to c, what is the vector a? बोलो जरा। 2i plus 2j plus 3k. 2i plus 2j plus 3k. 3k. Vector b Minus i plus 2j plus k. minus I plus 2j plus k, and vector c 3i plus j. 3i plus j. Given a plus lambda b is perpendicular to c. Therefore, a plus lambda b dot c is equal to 0. So a plus lambda b, 2 minus lambda into I plus 2 plus 2 lambda into j, 3 plus lambda into k dot c, 3i plus j is equal to 0. I completed the vectors. Now, vector I dot I1 or j dot j1 k वाला cancel. So 3 into 2 minus lambda plus 1 into 2 plus 2 lambda is equal to 0. 6 minus 3 lambda plus 2 plus 2 lambda is equal to 0. 8 is equal to lambda. That's the required result. Clear? कर दो? कर दो? minus 3 lambda plus 2 lambda minus lambda और जाके plus का lambda हो गया. Question number 11. Show that AB plus BA is perpendicular to AB minus BA. AB plus BA is perpendicular to
AB minus BA. Is it so? Yes, sir. नहीं To prove सर लास्ट वाले में mod इसमें B में mod of A into B. Mod of A into B plus mod of B mod of B into into A. It is perpendicular to mod of A into B minus mod of B into A. This is to be proved here. yes. So what I am going to do is I am going to find the dot product of these two vectors. Are these two vector quantities? Yeah, they are vector quantities. Magnitude of A scalar into vector. Scalar into vector, vector. Scalar into vector, again vector. Vector. Sum of two vectors, Vector. vector. Same way the other one is also vector. So I am going to find out the dot product of these two vectors. A B plus B A into A B minus B A. That is magnitude of A square B square minus magnitude of B square into A square. A square magnitude means as it is B square का magnitude square का मतलब magnitude of B square minus B square into that is magnitude of A square. Same quantities zeros. Therefore, given vectors are perpendicular. This we need to prove. Question number 12. If A dot A is equal to 0 and A dot B is equal to 0. A dot A is equal to 0 and A dot B is equal to 0. A dot A is 0. This implies A is 0. Vector A is 0 होगा मतलब. This A dot B is 0. What does it imply? Either A 0 or B 0 or A is perpendicular to B. So he has asked us, what can you say about the vector B? What can you conclude about the vector B? Therefore, B can be any arbitrary vector. क्यों? A0 B0 या A perpendicular to B0 तो कौन सी कंडीशन हमें पता है हो रही है? That is A is 0. A0 है ना हमारे पास, तो B कुछ भी हो जाए, तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा आएगा. जरूरी नहीं कि वो B0 हो या फिर B परपेंडिकुलर टू A हो. B अगर A के परपेंडिकुलर नहीं भी है तब भी काम हो जाएगा. B अगर A के परपेंडिकुलर है तब भी काम हो जाएगा. Is that clear? So I have written as B is any arbitrary vector, randomly chosen vector. Question number 13. अब इसके दो तरीके हैं, शॉर्टकट और एक लॉन्ग कट. बताओ क्या कराना चाहिए? दोनों करा देता हूँ, है ना? आपको अभी मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जो लॉन्ग कट भी होगा, सपोज वो क्लियर क्लियर किसी न किसी क्वेश्चन में किसी भी तरीके से यूज हो सकता है. आपका जो सा शॉर्ट लगे वो कर लेना. क्वेश्चन नंबर 13. You are given A plus B plus C is equal to 0. Is it so? And these are the unit vectors, and you need to find the value of A dot B plus B dot C plus C dot A. What I am going to do is I am taking one of the vectors to the other side. B plus C is equal to minus A. Taking dot product of both sides with A. A dot B plus C is equal to minus of A dot A. A dot B plus A dot C is equal to minus of magnitude of A square. So A dot B plus A dot C is equal to minus 1. Because A, B, C are unit vectors. So तीनों के magnitudes 1 होंगे तो इसका magnitude 1 हो गया. जैसे मैं पहले A को उधर लेके गया था, अब मैं B को उधर ले जा सकता हूँ.
फिर मैं सी को दौड़ जाऊंगा, ए प्लस सी इज इक्वल टू माइनस बी, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी विद बोथ साइड्स, माइनस बी डॉट बी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू माइनस 1. Okay, this is the second result, and same way a plus b is equals to minus c, c dot a plus c dot b is equals to minus c square, ca plus cb equals to minus mod of c square, ca plus cb equals to minus 1. Now, of course, these are the vector quantities. This is the third equation. I'll add these three equations here. First, second and third. So AB plus BC plus AC twice minus 3. AB plus AC, AB plus BC, AC plus BC. AB plus AB, 2AB. AC plus AC, 2AC, and BC plus BC, 2BC. So minus 3, AB plus BC plus AC, it is minus 3 by 2. That is the required result. इसमें मतलब पूछा था क्वेश्चन में. ठीक, दूसरा तरीका, A plus B plus C is equal to 0. Squaring both sides. A square plus B square plus C square plus 2AB plus BC plus AC is equal to 0. A square mod A square mod B square mod C square to AB plus BC plus AC is equal to 0. A square 1 plus 1 plus 1 plus 2 AB plus BC plus AC. So AB plus BC plus AC minus 3 by 2. That is the required result. ठीक है? Clear है? Question number 14. If either A is equal to 0 and B is equal to 0, then A dot B is equal to 0. If A equal to 0 or B equal to 0, it implies A dot B is equal to 0. But if A dot B is equal to 0, so either A equal to 0 or B equal to 0 or A is perpendicular to B. So is the reverse condition necessarily be true? कि अगर A dot B 0 है तो A और B 0 होंगे? No. This is also possible when A and B are perpendicular to each other and A is not equal to 0, B is not equal to 0, and but still A dot B would be equals to 0. ठीक है? Therefore, if A is perpendicular to B, then it is not necessary if A equal to 0, then then it is not necessary that A equal to 0, A and B are 0. If A equal to 0, clear है दोनों conditions? फिगर परपेंडिकुलर है तो जरूरी नहीं कि A और B 0 हो तभी वो A dot B 0 आएगा. It is also possible if A is perpendicular to B and A and B are not equal to 0.
Question number 15. If the vertices of a triangle ABC are this, find the angle ABC. What are the vertices given? A, vertices are given. Yes, sir. A की 1, 2, 3. ऐसे बनाओ इसको. A, B, C, 1, 2, 3. B is -1, 0, 2. 0. Yes, sir. 0, 1, 2. 0, 1, 2. And we need to find angle B. Is it so? Yes, sir. So what we do is, we first find the vector BA and the vector BC. BA कितना होगा? Position vector of A minus position vector of B. तो कितना आया? Position vector of A I plus 2J plus 3K minus B के लिए minus I plus 0J plus 0K. AB के लिए B sorry BA के लिए A minus B. I plus I 2Y plus 2K plus 3K. BC C minus B 0I plus J plus 2K minus I plus 0J plus 0K. I plus J plus 2K. अब जो वेक्टर्स मालूम है मुझे तो उनके बीच का एंगल निकालना है. Now we need to find the angle between these two vectors. So cos theta is equals to BA dot BC upon magnitude of BA into magnitude of BC. Is it so? BA dot BC 2I plus 2J plus 3K dot I plus J plus 2K upon BC BA का 4 plus 4 plus 9 and 1 plus 1 plus 4. सही है लगता है? कोई दिक्कत? केवल एक कि मैंने इसमें वेक्टर्स मार्क नहीं किए, तो मार्क द वेक्टर्स ऑल्सो. So cos theta is equals to 2 plus 2 plus 6 upon root 70 root 6. So cos theta equal to root 10 by 6 to the power of 2 102. Okay. So theta is equals to cos inverse 10 upon root 102. Cos करिए. 15th हो गया ना? 16th का. Question number 16. You are given. Show that the points A, B, C are the vertices of are collinear. Points A, B, C. A point है 1, 2, 7. 1, 2, 7. B 2, 6, 3. 2 6, 3. and C 3, 10, 7. 3, 10 -1. minus 1. 1. We need to show that these three points are collinear. Okay. So position vector of AB, position vector of direction ratio निकालो. Direction ratios of AB 2 minus 1, 6 minus 2 or 3 minus 7. That is 1, 4. 4 -4. minus 4. Direction ratios of BC 3 minus 2, 1, 10 plus 6, 4, minus and minus 3, minus 4.
So direction ratio of AB are proportional to direction ratios of BC. AB is parallel to BC. So A, B, C are collinear. Question number 17. Show that these three vectors forms the vertices of a right angled triangle. 2i minus j plus k. 2i minus j plus k. दूसरा I minus 3j minus 5k. I minus 3j minus 5k. 3i minus 4j minus 4k. 3i minus 4j minus 4k. We need to show that these 3 points are the vertices of a right triangle. तो हमें दो चीज प्रूव करनी है. पहले तो मैं इनकी तीनों साइड्स निकालूंगा. These three are the vertices given to us. A, B and C. So position vector of AB, BC and AC. तीन चीज निकालेंगे. AB के लिए B minus A, I minus 2I minus I minus 3j plus J minus 2J minus 5K minus K minus 6K. BC के लिए BSC minus B 3I minus I 2I minus 4J plus 3J minus J and minus plus K. And AC C minus 3 minus 2 I minus 4 minus plus 1 minus 3J minus 5K. ये वेक्टर्स निकल गया हमारे पास साइड्स के. अब यहाँ में डायरेक्टली निकालना है. आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है. बस साइड्स का लिख देना पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर पे. उसके बाद आप निकाल दिए तीनों वेक्टर्स. अब तीनों वेक्टर्स निकालने के बाद हमारे को प्रूव क्या करना है. दीज आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल. दो काम है. तीनों का मैग्नीट्यूड्स निकालो, पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कराओ, काम हो जाएगा. हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा. दूसरा तरीका क्या है कि check whether any sum of any two vectors is equal to the third one or not. किसी दो का सम लैम्डा टाइम्स ऑफ थर्ड वेक्टर है क्या? इन दोनों को चेक करो. 2i minus I minus 3j minus 5k. The sum of the first two vectors is equal to the third vector. Therefore they form a triangle. पहली बात तो क्लियर हो गई. एक जबरी वेक्टर आ रहा है. ठीक. अब इसके बाद दूसरी चीज हमें पूरी चेक करनी है कि किसी दो का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो हो जाता है तो दो वहाँ पे परपेंडिकुलर आ जाएगी. तो अगर वो परपेंडिकुलर हो गया तो क्या होगा? दो का सम तीसरे के बराबर आया. सो इट इज अ ट्रायंगल. और एक परपेंडिकुलर कंडीशन होगी, इट इज अ राइट ट्रायंगल. सो AB plus BC, that is I minus 3j minus 5k, that is equal to AC. So sum of two vectors is equal to third vector. Therefore ABC are vertices of triangle. Also देखो दो डॉट प्रोडक्ट इसका जीरो हो रहा है. -2 +2 -6 नहीं हुआ ना. -1 +6 नहीं हुआ. इसका 2 -3 -5 इसका हो रहा है. ऑल्सो BC डॉट AC इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो. कितना आएगा? 2i minus j plus k into I minus 3j minus 5k. 2 plus 3 5 minus 5 is equal to 0. So BC is perpendicular to AC. ठीक है. 90 डिग्री कहाँ पे होगा? C पे. C पे होगा क्योंकि C पॉइंट नॉर्मल है दोनों में. क्लियर है? So therefore ABC is a right triangle. Clear? Question number 18. If A is a non-zero vector of magnitude A and lambda is a non-zero scalar, then lambda A is a unit vector if lambda A is a unit vector if lambda A is a unit vector if lambda is a scalar. Lambda into magnitude of A equals to 1. Lambda equals to 1 by magnitude of A. That is lambda equals to 1 by A.
मैग्नीट्यूड पे दे रखा है ना उसमें, एक का मैग्नीट्यूड सिंपल ए दे रखा है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू ए दिया मैंने उसमें वहाँ पे, तो कितना आ गया लैम्डा इक्वल्स टू 1/n। क्लियर है?